तो मैं उनमें से था जिसकी हिंदी बड़ी अच्छी थी, जबकि मैं बंगाली था। मेरे को रा उड़ा में बहुत प्रॉब्लम अभी भी कभी कभार हो जाती है। एक टीचर ने मुझे ताना मार दिया कि तू यही कर, तो और कुछ तेरे बस की नहीं है, तू यही कर। आई एम नॉट गेटिंग कास्ट बिकॉज दे थिंक आई एम नॉट एक्टिंग वेल। इस ताक में नहीं रहना चाहिए कि क्या कास्टिंग डायरेक्टर से मैं ज़्यादा बात करूँगा तो मुझे ऊपर कर देगा या फर्स्ट कर देगा। थॉट जो होगा, अगर आपको बोला कोई हथौड़ा त्यागी प्ले करना है, so the first thing you want is your hand to be hathoda. Lowest point of an actor was to open a company for casting. That's my lowest point. Okay, first of all, thank you so much for having me here. Like, I think it's always great to go back to students. क्योंकि यहीं से आई थिंक सबकी शुरुआत होती है। हमारी भी ऐसी हुई थी, हम लोग भी ऐसे ही बाकी सीनियर एक्टर्स की कहानियाँ सुनते थे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते थे, और शायद उस आपसे बातचीत करने के टाइम पर शायद मैं भी थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए मेरे एक्टिंग मेमोरीज़ के या मेरी एक्टिंग थ्योरीज़ के। सो दैट्स व्हाई इट्स अ ऑनर फॉर मी ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके, इट्स एटलीस्ट नाइस टू नो ऑल ऑफ यू यार। एंड मतलब मुझे समझ में आया कि बहुत लोग यहाँ पे आई थिंक कुछ करियर के बाद भी आए हैं, कुछ लोग कॉलेजेस से डायरेक्टली आए हैं, कुछ लोग स्कूल से आए हैं, और सब लोग बहुत ही मेहनती हैं, और कुछ लोग पैशनेट है, कुछ लोग शर्माते हैं, और कुछ लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की। सो यू नो व्हाट आई मीन। सो दैट आई जस्ट अंडरस्टूड all of you through whatever this exercise was, and now you can want to shoot questions or yeah, we've got a couple of questions here. Okay. And then probably we'll open it up for them. But firstly, I think we should give him a huge round of applause for taking the initiative to knowing you guys. I think okay, so Shuruat, can you tell us where you started from? Where your journey started from? How did you know that you actually want to be a part of cinema or theatre, or get into this entire dreamy world? When did it all start? That's what student life, I think, back in school. I think school में जब मैं था, मैं साउथ में था, चेन्नई में, कलपाकम में, और वहाँ पर क्या है कि हिंदी कुछ बहुत ही कम लोगों की अच्छी होती थी। तो मैं उनमें से था जिसकी हिंदी बड़ी अच्छी थी, जबकि मैं बंगाली था। मेरे को रा उड़ा में बहुत प्रॉब्लम अभी भी कभी कभार हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे यूज्ड टू कास्ट मी इन लाइक यू नो व्हाटएवर हिंदी प्लेज वी यूज्ड टू डू दैट। तो वहाँ से बस एक हल्का फुल्का जिसे कहते हैं शौक चढ़ना, एनुअल डे फंक्शन में जाना। आप लोगों में भी बहुत लोगों ने ऐसे ही स्टेज पे जाके कभी एक्सपीरियंस किया होगा, वो मज़ा आया होगा, और वो हाई जो है वो आप हर जगह ढूंढने की कोशिश करते होंगे। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में स्कूलिंग करते करते स्टेज एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लग गया। पढ़ाई, आई वॉज डूइंग साइंस, सो आई डोंट नो, मतलब दैट वाज नॉट द चॉइस ऑफ माई सब्जेक्ट बट द चॉइस ऑफ माई पेरेंट्स. So that's why I had to take that. So it was not because it's not your choice. Sometimes you don't have the interest of studies. Because ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है. So I read a lot about history. So maybe that time if I had taken that, तो शायद मैं एक्टिंग को उतना ध्यान नहीं देता. तो अच्छी बात है, माँ बाप ने साइंस में ढकेला. तो and stage activities became more important for me than anything else in school. So I started enjoying that much. And एक बार एग्ज़ाम्स में आई थिंक मेरे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं थी, जबकि मैं साउथ में ऑलमोस्ट टॉप 3 में हमेशा आता था, बट दिल्ली जाके वो चेंज हो गया. सो आई थिंक एक टीचर ने मुझे ताना मार दिया कि तू यही कर, तो और कुछ तेरे बस की नहीं है, तू यही कर, स्टेज पे जा, तू यही सब कर. दैट एक्चुअली आई टुक इट वेरी सीरियसली बिकॉज आई रियलाइज दैट if I am good at something, you should. Then why shouldn't I pursue it? So it's very important for all of you to realize that if you're good at something, you are good at something. No matter what anybody tells you, that doesn't change. So वहाँ से of course then the thought of कि हाँ I can look at acting as a career, which is very
ambitious or dreamy. That's what people say. But I say that, yeah, you can actually think and build your career as an actor if you start early and if you also do the same kind of ट्रेनिंग प्रोसेस जो कि आप कोई भी इंजीनियर बनने में लगाते हैं, एमबीए बनने में लगाते हैं. आई एम श्योर बहुत लोग यहाँ पे भी मैंने सुना कि इंजीनियर बन के आए हुए हैं. तो 3 साल की मेहनत के बाद आपको डिग्री मिलती है, तो 4 साल की मेहनत के बाद डिग्री मिलती है. तो 4 साल, those many years you put into something and then you are eligible to build things. So that is what acting is all about. You have to give it time, you have to build it on, and then finally, you will reach the results. Thankfully, I got admission in Kirodimal College, which is known for its theatre society in Delhi University and across the Northern Belt universities, because it has always come up with batches who somehow make that college theatre look like proper mature theatre, which happens in probably Prithvi or otherwise in Delhi. So those 3 years for me was like मेरा वो एक्टर प्रिपेयर्स था, तो मैं वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा था. और वो 3 साल थिएटर और बाकी जो भी, आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग बट ऑल्सो अबाउट understanding text and understanding what you're trying to do, what you're trying to portray. It's a lot of discussions. It's not only about the action, it's also something behind the action. What are you preparing yourself for? So wo karte then I realized that this is what I want to do for sure. And so when you came to Mumbai, there was a conscious choice कि मैं ये करने जा रहा हूँ. Of course. So then how did casting bay happen? How did casting bay happen? It happened because a young actor in Bombay was not finding work. It's not easy to find work in Bombay. And I came here thinking that I'm a good actor. I came here thinking that, I will, definitely go to some office and some director is going to look at me and say, hey, this is my guy. These are the kind of stories you hear always, right? So yeah, I came here to do that. I just came here to be a star. And I was like, waiting for somebody to come and give me work. But then you realize that when you go for auditions, the reality is very different. And I had to find a job. And somehow I had assisted. So my theory in life is that you have to keep working. That's mine. It's not, you don't need to follow that. But my theory is that you need to keep working, especially around the people or the industry which you want to be a part of. So, because only then you will learn. So learning doesn't stop. It's अभी मैं सीख रहा हूँ and मुझे सीखते ही जाना है. That's what I want to do in life. मेरा WhatsApp status भी I think at school था, like for a longest period of time, because that's how I felt it, I think once I got my first break, जब मुझे स्त्री मिला था तब मैंने वो status हटा दिया था कि चलो मैं स्कूल से graduate कर गया हूँ, मुझे बाकी अभी पढ़ाई करनी है. So that's how I thought always. So casting became like a job which I could do because I knew actors. I was doing theatre, so I knew theatre actors. Plus I had other friends who knew other actors. There were a lot of actors in Delhi, raw, ready to act, who are now acting in a lot of shows and movies as and when we are talking. So बहुत ऐसे actors थे वहाँ पे उस time. So I started doing that job and I started assisting somebody called Gautam Kishan Chandani. He's one of the most senior casting directors in our industry. He has cast for films like Black Friday, Gulal, Dev D, No Smoking, all Anurag sir's earlier films, and then of course No One Killed Jessica, Once Upon a Time in Mumbai. So he did a phenomenal job during that early 2000 period. So I was associated with him. Vasan Bala, who is now a filmmaker, he was his assistant. So I used to be an intern. So I just loved it because मेरे लिए क्या था, एक एक्टर था, मुझे क्यूज देने होते थे दूसरे एक्टर्स को, तो मेरी भी एक्टिंग पॉलिश हो रही है और मुझे उसके पैसे मिलते क्योंकि मुझे रोल तो कोई दे नहीं रहा, तो मतलब एटलीस्ट यहाँ से तो I'll think. But the flip side is also that consciously मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा हूँ तो शायद मेरा रोल पाना आसान हो जाएगा, कि शायद ये डायरेक्टर साहब जो है मेरे ऊपर हाथ रख देंगे या कास्टिंग डायरेक्टर साहब बोलेंगे तुझे दिलाता हूँ मैं अगला रोल. ये मेरी मनो इच्छा थी, मतलब पर हुआ एकदम उसका उल्टा, क्योंकि गौतम सर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. He's still strict. He's still not given me any part. Like अभी भी उतनी फिल्में करते हैं, मैं उनको बोलता ही रहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है.
But that's how he was, and that's how the directors I was working with, Rajkumar Gupta that time, No One Killed Jessica or Ghan Chakkar. I kept trying, but it was not happening. So for me, that the whole journey was that as an actor, I'm doing a job to survive. I'm doing a casting job, which is very close to cracking a role in a film or wherever. उस time OTT नहीं था, film. TV मुझे करना नहीं था, because I didn't want to go to a shoot every day. मेरा simple था, मुझे 24 मतलब I don't want to go 30 days in a month for a shoot. I'll get bored of it. So that's when I was not able to crack it for like 6-7 years after having assisted, after being casting director of films. And yeah, like I had done big projects like Dirty Picture, Gabbar is back, like those Akshay Kumar, ये सब बड़े लोगों की फिल्में, बंसाली सर की प्रोडक्शन हाउस में. And I was not going anywhere in my life, but casting was something which was a constant, and somehow we were able to do something with it. We had a different plan. Me and Anmol are both from like Delhi University College Theatre gang guys. उसने भी थेस्पो में बहुत काम किया, मैंने भी बहुत काम किया. तो हम लोगों के अंदर एक इसे कहते हैं कि एक यंग जोश था कास्टिंग को लेकर. We always tried to push the boundaries beyond the stars or the known faces, as they say in casting world, and we wanted to create spaces for different new actors, which probably I was not able to create for myself. So somehow what you are going through, you're trying to do through a job, and that is when casting may happen, and that is when I decided कि अच्छा मुझे काम नहीं मिल रहा है, my people are not giving me work, the places where I could get easily cast, I am not getting cast because they think I'm not acting well. And they were right. So now today when I go and see those auditions, I'm like, yeah, that's very bad acting. That was very raw and bad acting. That's not camera acting at all. I came from theatre. So for me, stage acting is something which I am used to. I know how to be in front of 200 people, 300 people in light. But I don't know how to be in front of a camera which is intimate. So all of these things I learned through casting. I learned through my job. I learned through understanding what the directors were talking about, what an actor would do in an audition, like a Jaideep Alawat, when he would come and audition, his audition would be very different from all the other guys. So you immediately know this guy is getting cast. But what is it that he's doing different than that? So that, to understand those small details about performances, I think that helped me build myself as an actor, but I was not able to get roles. So that's when casting became like a thing where I had actually lost hope in my acting career for some amount of time. I knew that I'll become an actor one day, probably I need to train myself better. That's why I always told myself that if you're not cracking it, if you're not getting the job, that means the problem is with you. That means that you are not delivering what a filmmaker is looking for. Because this is a question a lot of actors keep asking me. That why are we not getting selected? Why are we not getting shortlisted? You might be a great actor, but there is something, कुछ तो कमी होगी आप में या मुझ में कि डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं ये नहीं वो दूसरा वाला चाहिए. और वो कमी कभी भी मतलब सूरत शक्ल हाइट या बिल्ड के नहीं होती है, वो हमेशा एक्टिंग की ही होती है. एंड दैट इज द रियलिटी. वो चाहे कितने भी फैक्टर्स हों, बट हमेशा मतलब गुड फिल्म मेकर्स विल ऑलवेज गो विद गुड एक्टर्स. So I had lost hope and casting में शुरू किया. But उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि I focused on filmmakers who were making short films. I focused on filmmakers who were making independent films. I did not focus on big filmmakers. मैं कभी किसी बड़े filmmaker के पास नहीं गया कि सर मेरे को audition ले लीजिए या मुझे काम दे दीजिए. लेकिन मैं जितने भी वैसे directors होते थे जो students निकलते थे FTI से या कोई जो मेरे आसपास के कोई असिस्टेंट डायरेक्टर जो शॉर्ट फिल्म बना रहा है, मैं उनके साथ हमेशा जुड़ता था. टू ऑलवेज कोलैबोरेट विद देम. एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ फिल्म कॉल्ड अजी. देवाशीष मकीजा had directed that film. That in a way restarted my acting career or me as an actor, like my thought process as an actor. Sometimes it's all about the thought process. You're thinking like an actor or you're not thinking like an actor. Aji completely changed that. फिर वहाँ से then I started getting like Stree happened because of Ajji. Yeah. Stree, because Amar Kaushik had seen Ajji and that's when he knew that okay, he's ready to act in a film. Sometimes you need to be ready to be
on a big screen. So you just mentioned that you had done a lot of theatre and camera का language सीखने में आपको थोड़ा वक्त लग गया. So now since these people are going to be stepping out very soon, do you still suggest that they actually go practice theatre as a skill to get better with their craft, or you need theatre. You without theatre, it's going to be very difficult because it's all about visualization. It's all about imagination. No matter how, and you will realize that when you're doing CG films, when there's a green screen, it's going to be very difficult to get to your core and truth and everything, because that time your imagination is going to work. That time you have to be aware of where you are, what is the world which the director is creating, and that should continue in any film. It's not about CG or not CG. Like, you have to constantly imagine. You have to constantly be in that space, be in that moment. Correct. Both loosely, everybody talks about it, but I think it comes from stage, because you can't fake on stage. So and that time it's like a one take for 2.5 hours. One take. Think about it. Like, you don't have retakes, you don't have anything. You have to be in the moment, you have to remember the lines, you have to remember the masking and everything. So that will make your mind alert. It will just polish your body, your muscle memory, everything will be of an actor. And then, of course, when you come in front of camera, you have to change certain things, which is not very difficult. It's something which you need to keep adapting yourself. આજકાલ તો everybody is on camera. Yeah. So these days, so I think that. So how important do you think, when you're casting for a little project, you just mentioned that camera, everybody is on cell phones. So how important is it for them to actually take charge of their social media accounts? Does that actually affect them getting in a part? Because we keep hearing that there is a certain number of following that you need, a certain strong profiling that you need on social media to get into the game. Is that true, false? Do you defy it? Do you agree to it? ये सवाल एक्चुअली बहुत जगह पूछा जा रहा है, ये इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है, हर जगह पूछा जा रहा है. लेकिन मैं आप लोग एक बार ना सिर्फ इंस्टाग्राम में जाके अपने जो भी फॉरेन के फेवरेट एक्टर्स हैं या जो भी आपके परफॉर्मर्स हैं उनके प्रोफाइल में जाके देख लीजिए. आपको आई थिंक बात समझ में आ जाएगी कि उनके फॉलोअर्स जो हैं शायद आपके किसी दोस्त से कम. ये जो फॉलोअर्स वाली बात जो चल रही है ना, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो ग्लोबल टॉप एक्टर्स हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स जो है मेरे बहुत सारे दोस्तों से कम, और वो मेरे बहुत सारे दोस्त कहीं नहीं आते हैं in the global platform of actors. You know what I mean? So Instagram is not, it's not जिसे कहते हैं, that's not the validation you should be looking for. That's a different validation. That's your social media है यार. वो मतलब वो actual तुम्हारा medium नहीं है, वो दूसरा medium है. उसको दूसरे तरीके से देखो. If you like, it suits you, great. Doesn't suit you, you don't need to really push yourself, because I don't think any big director, any good director, any big director, anybody who is seriously trying to make his film or his show or his whatever short film, they will ever go to an Instagram account and see the number of followers. They will only see the audition tape. वो सिर्फ audition tape देखेंगे. जिन जगहों में वो चीज़ देखी जाती है, मतलब I don't know, but probably I don't think we watched those shows. I don't think उन shows की, मतलब मिर्ज़ापुर की कास्टिंग हमने की थी, हमें नहीं पता था कि इसके कितने followers हैं, लेकिन हाँ मिर्ज़ापुर के बाद सबके followers बढ़ गए. So it's very simple. Yeah. So like I was not very comfortable with Instagram, but then of course I had to like do it. I'll just tell you my thing. Like I was always in and out. I was told कि हाँ जाना है, करना है, but then I'm like नहीं, मुझे नहीं करना है. like नहीं करना पड़ेगा, तो फिर किया, फिर नहीं मजा आया, फिर वापस छोड़ दिया. ये करते कराते like the whole pressure of after 3 Dream Girl and Bala, I think I had 3 films and I was whatever TVF का कुछ shows किए थे, then people were like constantly telling me about followers, ये करने चाहिए, वैसा करना चाहिए. It's a pressure. Why are you taking it? And it didn't matter after Patal Lok. You know what I'm saying? Like, it did not matter, and I don't need to do anything. It's that if whoever the fans are, they're going to be with you as an actor. So that stardom is a different start. For that, you have to do very different things. So social media के लिए वो अलग
एक चीज़ आती है, हमारे मैनेजमेंट भी आके हमें बोलते हैं कि ये चीज़ें करना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो इतने फॉलोअर्स आएंगे, बट दैट्स अ डिफरेंट जॉब प्रोफाइल, दैट इज नॉट एक्टर प्रिपेयर्स, you know, so yeah. Now talking about your craft, so the first thing that you do when you get a script or when you hear of a certain role, कि आपको आपके सामने ये कैरेक्टर आ गया है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, what is the first thing? Do you have a set process? Does it change with everything? How do you approach a certain part? I don't know, I think I'm trying to find Okay, let's just say, I mean, no, see, basically what happens is that the character has to speak to me for me to understand the character. So it is all about कि कितना अच्छा लिखा है. If it's a well-written character, I really don't need to do much work. I will just I'll just get to the world where the writer is taking me. That's what I'm saying. Like it's exactly like how we would read fantasy stories. You know, I don't know. Many of you must have read Harry Potter, for example. ठीक है, Harry Potter. Now, when you read Harry Potter, you're in a world, ना? You go into a world. आप एक दुनिया में चले जाते हो. आप देखते हो ये चल रहा है, वो दुनिया चल रही है. आपके दिमाग में वो पूरे that world वो है, क्योंकि वो लिखी इतनी अच्छे से गई है. तो जब अच्छे से कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, तो आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप observant हो या आपको you know whatever, like you like reading and that's what I'm saying, that you have to open this the most. दिमाग जितना खुला होगा उतनी सारी इमेजिनेशन आएंगे, और वो खोलने के लिए ये टाइम है. ये जो एक्चुअली है, इसमें एक्टिंग नहीं सीखना है आपको. इसमें आपको ये like you know what I'm saying, like it's not about learning acting, it's about like you know exploding your brains out like completely. It should be like, so when you read the script or when you read the character, you will know exactly what to do with it. If your mind is that open. अगर वो दुनिया बड़ी छोटी है तो फिर वो गोल गोल घूमते रहोगे, वो खोलने में बड़ा मुश्किल होगा. दुनिया अगर बहुत बड़ी होगी आपकी अपने अंदर की दुनिया, तो फिर it will be easier to approach. That's what I feel. I don't have a set rule pattern, कुछ नहीं है. Yeah, I don't. So how did the journey of Hathoda Tyagi start? When did you hear it for the first time? What was the first visual that you got? Did you have this कि मैं इसको ऐसे play करूँगा? Or you went out of the set blank? No, the first visual I had was to probably build muscles. That's what I thought. You know, that's the first thought जो होगा, अगर आपको बोला कोई हथौड़ा त्यागी play करना है, so the first thing you want is your hand to be hathoda. You know, that it should look like somebody is like, you know, punching you, this, that. That was my first thought process. And then I realized that I don't need that thought process, because you know that is what makes him bigger. He might be whoever, but he has the guts. वो कहते हैं ना, गूदा है वो चलाने के लिए, उसके लिए आपको बाजुओं का स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ का स्ट्रेंथ चाहिए. Now this part, I mean that's आप ब्रेक करते हैं ऐसे एक कैरेक्टर को, कि आपके एक इमेज है, वो इमेज में क्या है, एक आदमी है जो लोगों को मारता है, बहुत आसानी से मारता है. तो आपका जो बेसिक पहला चैलेंज था कि वो बल से मारता है या दिल से मारता है, वो क्लियर हो. अब वो मारता क्यों है, ऐसी नौबत क्यों आई कि इसने यार 50 मर्डर या जो भी इतने मर्डर उसने किया था, 45 मर्डर किए थे, ये नौबत ही क्यों आई. तो वो जिंदगी उसकी, अब वो जिंदगी आपने देखी है थोड़ी शो में, जो नहीं देखी है उस पे उसी जिंदगी को लेके मैंने उसकी पूरी जिंदगी बना दी. कि क्या हुआ उसकी बहन के साथ, या वो बचपन से क्या हो रहा है, पहली बार उसने हथौड़ा कब चलाया होगा, ये सब बैक स्टोरीज ऑब्वियसली सब लोग बोलते हैं, पर वो बैक स्टोरी मैंने अपने मन से नहीं बनाई है. वो कहानी जो स्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत बार मैंने बैक स्टोरी सुने जो कुछ और होती है, मतलब वो कैरेक्टर, क्योंकि आप अपने को लगता है कि कुछ भी बैक स्टोरी बनाना, कुछ भी बैक स्टोरी नहीं बना सकते. आपको वो जो कहानी, वो स्क्रिप्ट जो लिखा है उसके अंदर से आपको एक अपनी कहानी बनानी पड़ेगी. और यूजुअली राइटर्स के दिमाग में अगर जब क्लियर होता है वो, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा. सो देन of course, like then to understand what he is going through, to understand his social and his political scenario, and yeah, and to put that in the character, to make him under, like there was a human
but that human became a demon. Now, whatever reasons we can find out socio-politically, that's a different thing. Yeah. That's for me or for you to discover. वो आप डिस्कवर करो कि आपके लिए हथौड़ा तरीके का सोशल पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थे. वो मेरा अपना था. तो मैं जो अखबार पढ़ता हूँ, मैं जो सोच रखता हूँ, मैं जो समझ रखता हूँ, मैंने उस हिसाब से उसका समझ बनाया. जो आप अखबार पढ़ते हैं, जो आप जिसमें विश्वास करते हैं, जो आप समझ बनाना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से हथौड़ा तरीका कैरेक्टर बना सकते हैं. और वो भी सही है, ये भी सही है. ठीक है. Nice. So इस पूरे journey में, I'm sure you must have seen huge dips. There may have been times where you must have questioned, you might have had your doubts, insecurities, which I think every artist goes through at some point or the other. Would it be okay for you to share something like that? And no, so that's what now my lowest point of an actor was to open a company for casting. That's my lowest point. मैंने जब कास्टिंग में शुरू किया था मेरा लोएस्ट पॉइंट एज एन एक्टर था कि अब मैं एक्टिंग त्याग रहा हूँ, मैं कास्टिंग में शुरू कर रहा हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई ऑलवेज वर्कड, आई नेवर स्टॉप वर्किंग. सो द डिप्स एंड द लोज एंड एवरीथिंग, it might have come as an actor, but personally I never took it. Lovely. You know, Amazing. I don't want to give excuses ki why this doesn't happen, but this happened. You have to keep doing something to be alive. True. You know, I think to this spirit. so yeah. I think it's very. Thank you. So yeah, that was the point. वो रिजेक्शन से ही कंपनी खुली है. To something so big. Anybody has any questions? Deep. Hi sir. So Hi. You played characters such as Hathoda Tyagi, there's Compounder. These are very complex characters. These are not the people you meet every day in your real life, right? So when you go prepare for a character like this, are there any challenges that you face? Because in your real life, I'm assuming you don't go banging everyone's head. So the challenges you face when the character like this comes along. So the biggest challenge I faced was during Ajji. Okay. Because there, so it's okay, but that there I played a child abuser. Okay. Yeah, there I played a child abuser, like somebody who is younger than 8 years, I think, 7, 8 years. So that was quite challenging because you don't know how to make your mind or how to think about it. Like, what do you want to think about? How can you even prepare for something like that? So now, but of course we had workshops which basically guided me towards patriarchy. You know, because it comes from there. The core comes from there. I might not be a patriarchal guy, but that guy was. So for me to first reach patriarchy was the most difficult process. Because I am usually a very liberal human being. Okay, and that's how I've been always. So for me to understand that was the most difficult part. Once I understood that, now honestly, it was not so difficult. So the root cause of such things are when men think that they are the bigger race. Once I have gone through that thought process of playing a character like Dhavle, for me playing a compounder or playing a Hathoda Tyagi is easier. Because you're really going down from the darkness of that world, So yeah, so that is how I think both the characters were actually Better than Aji. much better and much easier. I didn't have to prepare much. I didn't have to think about them much. I just need to feel the power which probably Dhavle had, and they needed just 50% of his power. In fact, Vishal Tyagi is a saint in front of Dhavle. So yeah. Surat sir. Yes, anyway. Sir. I just want to ask you the same regarding Ajji itself. Ji, sir. The character's name was Vilaswar Dhavle. Ji, sir. Ji. We often tell these people that there is always research involved. And of course, directors and writers, they guide you to a certain point. After that, as an actor, I would just like to know how did you, because that being one of your first, after your theatre stint, being one of the first, where you're coming up with a character which is completely not you. Yeah. How would you, in a simple way, tell these people how research and everything would help? Like, how did it help you to get there? Like, I understood you're talking about patriarchy, but then
just a starting point for that. There was this one, so एक बांग्लादेशी रेड लाइट एरिया का ना एक डॉक्यूमेंट्री था, and it followed a guy who would go to these red light areas every day. Like he would frequent, he's a नशेड़ी भी है, मतलब जो भी है, like he's very low life, who would do that. So that was the first documentary I saw, like, you know, because that's what they've told me, just to see what the red light areas are, because this is जो मतलब to understand कि ये जगह कैसी है, वहाँ पे इज्जत क्या होती है औरतों की, और एक आदमी किस तरह से वहाँ पे जाता है. तो just to see the world, पहले ना सबसे important होता है दुनिया में जाके देखना, वो दुनिया का रिसर्च करना, you know, characters, समझ रहे हैं, मतलब, you know, to understand कि वो जगह क्या है. Space. वो जगह ही नहीं समझ में आएगी मुझे, तो मैं अपने आप को डालूंगा ही नहीं, मैं पर डाल ही नहीं पाऊंगा. फिर जगह में डालने के बाद मुझे दिख गया कूड़ा कचरा नाली, मुझे दिख गई आंटियाँ बाहर, मुझे दिख गए बच्चे खेलते हुए नंगे हुए, मुझे दिख गया वहाँ पे सब गंदगी. उस गंदगी में फिर मुझे भी इंसान को डालना है जो कि सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है. तो कितनी ईजी हो गई है सडनली टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर इन दिस मच, दिस इमेजरी, दैट्स एवरीथिंग इज, यू नो, disgusting, but this guy wears white and he walks on those roads thinking he's white collar. So the authority he has in that area, the authority he has about everything in that area. तो छोटी बच्ची तो कुछ भी नहीं. तो यहाँ से एक बेसिक जर्नी शुरू हो गई. अब इनकी रिसर्च करना बड़ा आसान है यार, मतलब, you know, to any what do you want to, I think, for you to understand, you have to just read a lot of stuff which you just read on newspapers, you will understand life. I really think that sometimes my research starts from newspapers. In fact, Vishal Tyagi ke liye, I was following one murder case which happened in UP, and I kept following and I realized कई बार हमें फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आती है कि ये हत्या हो गई, बुजुर्ग लोगों को मार दिया, इसने हत्या किया. उसके बाद ना कुछ टाइम बाद ना फॉलो अप आर्टिकल्स आते हैं जो पेज 4 और पेज 5 में चले जाते हैं, और वहां पे लिखा होता है कि वो शायद निर्दोष था या उसका रीजन क्या था, उसने क्यों मारा था. जो क्रिमिनल साइड ऑफ द स्टोरी है वो हमें कभी नहीं मिलती है, वो फ्रंट पेज पे सिर्फ क्राइम मिलता है, बट एक्चुअल लाइफ स्टोरी हमें शायद 5वें 6ठे पेज पे मिलती है. तो दैट इज वाई इट्स वेरी, आई टेंड टू, यू नो, डू दैट. और आजकल के टाइम में ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्रीज है. Documentaries will teach you much better than, you know, and it will give you a visual representation also of how these guys are. For a character like that one played in Ajji and also for Hathoda Tyagi, does that affect your personal life? Ajji affected my personal life, I feel. I became, how I dealt with it? Yeah. I went for a holiday, एक महीना वही करते हैं सब, डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं, तो मतलब यही कर सकता है आदमी. आई हैड जस्ट बिकम वेरी, मैं सच में बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड और गुस्से वाला हो गया था, बिकॉज वो अथॉरिटी इतनी अंदर चली गई थी. आप समझ रहे हो कि लाइक यू फील द अथॉरिटी, यू फील द पावर, सो यू आर फीलिंग इट. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक नॉट फील इट, एंड कॉन्स्टेंटली while shooting to more, because while shooting you are in that rush. You're going to that places, you're slapping your co-actors, you feel the power, you know, it just shakes your, and also it was my first performance. First big film role था मेरा. मैंने इससे पहले फिल्म एक्टिंग की नहीं थी, तो मेरे को तो पूरा, I did not even know. Now I at least know the ways of cutting yourself out and in and out. That time I didn't even have those kind of understanding कि होता क्या है. You just be in the character, like a 2.5 hour long take. You are in the character. So that was like 15 days of being in the character. Hi sir. Sir, what do you enjoy most about acting? I don't know. I think, what do I, just the process of, like, you know, going and performing different parts, like, you know, characters who you would have not been able to see or know अगर आप एक actor नहीं हो.
है ना. अब मैं एक्टर हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं दुकानदार को भी समझ सकता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा हो. और एक बहुत बड़ा आदमी जो क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर से चढ़ रहा है, उतर रहा है, उसकी ज़िंदगी में समझ सकता हूँ कि क्या कॉम्प्लिकेशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, बिकॉज I can also maybe playing them. So whenever I play a character, I find it very exciting to know about these guys कि अरे यार ये ऐसा था. Recently I did something where this guy is a multi-billionaire and all that, and I was sitting with real multi-billionaires, just to, I'm like, okay, this is like something which I would have never experienced if I was not an actor. So to experience these new things about and learn about people and society in either ways, I think that gives me the high. No. हाँ, श्रीजी. एक एक्टर की इनिशियल इयर्स में, शुरुआत के दिनों में, जब उसे मनपसंद काम नहीं मिल रहा है, ओके, व्हेन ही इज आउट ऑफ वर्क, वो खुद को कैसे मोटिवेटेड रखे एंड खुद को कैसे प्रोडक्टिव रखे, कैसे अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं? मतलब ये अगेन ये हर आदमी का अपना है, ये इसका कुछ कोई ऐसा सिंपल कोई फॉर्मूला या तोड़ तो नहीं. पर जैसा कि मैंने कहा कि आपको, और पता नहीं मैंने विदेश में बहुत ज़्यादा देखा है, अपने देश में थोड़ा कम देखता हूँ मैं, कि जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे काम करते हैं वहाँ पे. और बहुत बार ऐसा मतलब किसी कोई प्ले देखने गया हूँ या कहीं जगह पे रेस्टोरेंट में खाना, वहाँ पे तो ऑफ कोर्स द जॉब क्वालिटी इज़ डिफरेंट. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ वो वाली बात है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि काम जो है वहाँ पे वो लोग करते हैं, वो पूरी पार्ट टाइम काम करें या कुछ करें, सर्वाइवल के लिए ना सारे एक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. यहाँ पे पता नहीं ये प्रथा क्यों है कि बैठे रहते हैं. यहाँ पे ये वो वाली प्रथा है कि बैठ के क्या बोलते हैं वेट करेंगे, कभी आएगा, 4 दोस्त मिल गए तो टाइम कट जाएगा. अब वो 4 दोस्त में हो सकता है तुम्हारे 10 साल कट जाए, तुम्हें पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर तुम काम करते रहोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा और तुम आगे बढ़ोगे. लाइक यू विल एटलीस्ट keep every action will basically keep taking you towards your goal. The more you keep in sit and wait, it is going to actually drain you out. Your skills will become less sharp. You will start your timing. वो होता है, जितना आप बैठे रहोगे, जितना आप अपने माइंड को काम नहीं करवाओगे, उतना ही आप भी स्लो होते रहोगे. And as actors, you have to be on your toes all the time. मतलब इंडस्ट्री के अंदर ही कुछ ना कुछ आप ढूंढो. Yeah, why not? There are so many jobs. मतलब कितने सारे काम हैं यार जो मतलब एक्टर्स कर सकते हैं, और सेट पे ज़रूरत भी पड़ती है. बहुत बार ऐसा होता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स को नहीं पता सीन में कि क्या बोलते हैं, क्या करना है. अब हर बार एक्टर जो है डायरेक्टर को जाके पूछ रहा है, डायरेक्टर कितने लोगों को बताएगा. इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं. मैं एक बात बोल रहा हूँ जो मैं कहीं जगह देखता हूँ. तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेट्स पे काम करना चाहते हैं, डायरेक्टर्स के बीच में रहना चाहते हैं, तो रहिए. यू गेट पेड फॉर इट, यू गेट टू सी अ शूट. You get to interact with big directors, you get to interact with good actors, sometimes you get to give them cues, which people are also सुन रहे हैं, वो सब सुन रहे होते हैं. कोई अगर एक एक्टर हो जो अच्छा क्यू दे रहा है मुझे, तो मैं पूछता हूँ भैया कि तुम एक्टर हो क्या? हाँ जानता हूँ. गगन अरोड़ा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्त्री के टाइम पे एडी था. गगन अरोड़ा एक एक्टर है जो है ना, हाँ देखो फेमस भी है. सो आई एम सेइंग, सो नाउ दैट गाय वाज एन एडी ऑन स्त्री, अ जूनियर एडी. एंड आई रिमेंबर when he came to me, कुछ तो क्यूज वाली बात हुई थी और मैंने उससे डायरेक्टली पूछा था कि तू एक्टर है, तो वो शर्मा गया था कि नहीं हूँ. बट आई न्यू दैट ही इज एन एक्टर. वो नहीं छुपती है बात. वो एडी होके भी बन गया ना, मतलब नाउ इज, आप लोग सब जानते हो गगन अरोड़ा को, राइट? मेरे ऑफिस में निकले हुए वीर राजवंत सिंह, ही इज एन एक्टर. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन. उसका भी एक ईशा चोपड़ा के साथ एक आता है, आसिफ बोल के एक एक्टर है जो मिर्ज़ापुर में था, अली का जो राइट हैंड था, जो पंचायत में भी है, लाइक. सो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने मतलब एंड ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. सो बट ही वाज आल्सो, ही तो वर्कड एज एन वेटर. वो तो वेटर था, केटरिंग क्या बोलते हैं, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी लाइक डिफिकल्ट हाउस होल्ड. सो ही वॉज वर्किंग इन बॉम्बे एज अ वेटर. He has been working as a caterer के साथ वो काम करता था. वो उस लेवल का वेटर था कि उसको हॉल में अंदर आने की परमिशन नहीं थी, बस हॉल के पीछे से खाना दे सकता था. And then he joined casting. We worked with him and everything. And then from there he got work. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो एडीज थे या कुछ और थे जिनके पास काम आया है बाद में. We'll take one last question. Sir, as a casting director,
जब कोई ऑडिशन देने आता है तो आप उसमें क्या देखते हो और आई मीन उस एक्टर को क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए कि कास्टिंग डायरेक्टर उसको कभी कॉल नहीं करे? मतलब खराब एक्टिंग नहीं करके आनी चाहिए। अगर तुम खराब एक्टिंग करोगे तो नहीं आएगा कौन। और नहीं पता नहीं, आई थिंक क्या करना चाहिए, हमेशा प्रिपेयर होके जाना चाहिए। ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो आपके एक्चुअल डाउट्स हैं वही पूछना चाहिए। इस ताक में नहीं रहना चाहिए कि क्या कास्टिंग डायरेक्टर से मैं ज़्यादा बात करूँगा तो मुझे ऊपर कर देगा या फर्स्ट कर देगा, या ये बोलना कि आप हमारे लिए बोल देना या रिक्वेस्ट कर देना। मतलब मैं आई एम सेइंग दैट इफ यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट, only then a casting director or a director will believe in you. If you are a good actor, just do your job. Don't try to have friends or force yourself to have friends if you don't feel like having friends. Okay, it's not a pressure job. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि you have to somebody spoken about contacts. उस कॉन्टैक्ट्स एंड लाइक मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कितने लोगों को मैसेज करता हूँ, उससे नहीं होगा। फोकस ऑन योर वर्क, गो डू दैट, एंड इफ़ यू आर गुड इन एन ऑडिशन, वो कास्टिंग डायरेक्टर आपको कहीं से भी होगा ना ढूंढ के निकालेगा। उसका काम है वो। उसका काम ये नहीं है कि कास्ट करना, उसका काम ये है कि यार ये देखो ये ज़बरदस्त एक्टर निकाला है मैंने ताकि डायरेक्टर, that's what casting directors always want. That I found this guy. This actor is my find. So वो my find वो तभी बोल पाएंगे जब आप find लायक हो। तो find लायक बनो। तो that will basically make or break in an audition room or in any casting department, anywhere you go. Ads, this, that, whatever. If you are good, they will call you again. If you are average, they'll still call you. If you're bad, they'll still call you. तो ऐसा कभी नहीं होता है कि they will stop calling you. The only time they'll stop calling you probably is that if you really get into their personal space or you really try to, buck them down with your whatever, like trying to impress them kind of a. Don't try to impress. Try to impress on camera. बाकी टाइम नॉर्मल रहो। कोई अगर आपसे अच्छे से बात कर भी रहा है तो आप अच्छे से बात करो, but don't take it as he is trying to he will do something. Nobody is going to do favors on you basically. तो कोई फेवर नहीं करने वाला, वो आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर, और फिर सामने वाला सब कुछ करेगा आपके लिए। Thank you.